ये मैं दे दूं? अब मेरा हो गया, मैं आई एम ब्रेथलेस. Please have water first of all. Yes, I am breathless. Thank you, sir. God bless you. मैं बैठ जाऊँ? हाँ बिल्कुल. परिणीति, जी. मेहनत मशक्कत तो दिखाई दे रही है. ज़बरदस्त. और जब मुझे ऐसा लगता है, जितना भी मुझे समझ आता है कि जब भी आप इस तरह की कोई फिल्म करते हैं, यू नो, यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ बायोपिक, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बिकॉज यू आर पोर्ट्रेइंग समबडीज लाइफ जर्नी. एट द सेम टाइम आपको अपनी भी चीज़ें डालनी होती है. व्हाट वाज योर नोट्स? आपके इमोशनल नोट्स क्या थे? आपके प्रोफेशनल नोट्स क्या थे व्हेन यू वर प्लानिंग दिस ऑल? So there are 2-3 answers to your question. पहली बात तो मैं एक ऐसे चैलेंज को ढूंढ रही थी. जिस तरह की फिल्में मैं कर रही थी, they were pretty much an extension of me and also what writers and directors thought I was. And so they were writing roles which were very similar, and I was also choosing those films. When this film came into my life, it was exactly what I was looking for, because I was looking to surprise everybody. I was looking to do something which I'm not really known for. You know, I'm known to be the girl next door, or I'm known to be a happy whatever girl. But that's not really actually me. And I wanted to show that on screen. I wanted to show the real me on screen. So a sports biopic of a person who is still there playing in action, who is known to be a crazy tigress on court, is exactly the kind of role I would have done, even if it was fiction. So biopic was like, bolte hain na, sone pe suhaga. And then there was Amol sir. Literally, these were the two names. I heard Saina Nehwal, Amol Gupte. Kahan sign karna hai? I was literally like that. Yeah. So there was no thinking at all. And जो आप बोल रहे हैं ना कि मैंने प्रेप के लिए क्या किया, मैंने ये क्या किया, वो क्या किया. जब ये फिल्म की जब मुझे नरेशन मिली थी कि बैडमिंटन खेलना है, अब हम सब सोचते हैं कि हमको बैडमिंटन आता है. Yeah, that's क्योंकि true. हम सब गली क्रिकेट खेलते हैं और गली बैडमिंटन खेलते हैं. और मुझे लगा 2-3 दिन में हो जाएगा मेरा ट्रेनिंग, मुझे बैडमिंटन तो आता ही है, मुझे सिर्फ शूटिंग पे पहुंचना है. लेकिन जिस दिन मैं ट्रेनिंग पे पहुंची और मेरे जो कोच सर हैं, ईशान जो यहाँ बैठे हैं, बाद में आएंगे, उन्होंने बोला आपने रैकेट ही गलत पकड़ा है. तो मैंने कहा ओह, ये तो थोड़ा फ्लॉप शो हो गया. एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो लोग प्लेयर्स हैं और जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं हिंदुस्तान के लिए, दुनिया में खेलते हैं, वो एक बहुत अलग गेम है. और जो हम गली बैडमिंटन खेलते हैं वो एक बहुत अलग गेम है. तो माय पर्सनल गोल विद दिस फिल्म इज़ कि लोग समझें कि जो हमने सीखा है, मैंने सीखा है, और जो बैडमिंटन की कदर होनी चाहिए इस कंट्री में, वो होनी ही पड़ेगी. क्योंकि आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर गेम एज हेक्टिक, एज डिफिकल्ट टू प्ले एज बैडमिंटन. But the players make it look so easy, and we play under our houses every evening that we think it's very easy. So I want people to understand it took me almost 5 to 6 months to just get ready with a basic thing for the shoot. So that's how difficult it is. That was my prep. Emotionally, I left everything to Sir. You know, him being the actor that he is, I used to dread the days कि कभी कभी वो आके सीन दिखाते थे करके, मुझे लगता था ओ माय गॉड मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी ऐसे. यू नो, बिकॉज सर जिस तरह से करते हैं, यू कांट हैव दैट इमोशनल डेप्थ. But was it emotionally overwhelming, you know, at portions, because इतना you know, किसी के किरदार को प्ले करना, उसके पॉइंट्स दिमाग में रखना, एट द सेम टाइम, यू नो, अगर वो चीज़ आप बिल्कुल सामने रख देते हो, देन यू गेट लाइक ओ गॉड आई हैव डन इट, दैट फीलिंग. सो वाज इट 100%. बाय द वे मैं आपको बताती हूँ, यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन जो अभी भी अगर नेशनल एंथम आप प्ले करें ना, तो मुझे Yes, गूज that's बम्प्स what होते I हैं want, yeah, और मैं रोने लग जाती हूँ. एंड मैं जेन्युइनली ड्रामेटिक होने के लिए नहीं बोल रही हूँ. अभी तक नेशनल एंथम इज माई फेवरेट कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल टाइम्स, बिकॉज अभी तक मेरे को लगता है कि देर इज नथिंग एल्स मेड लाइक दिस. And this film being about a national hero, about the stuff that he's written, You the know, things that she one says. thing I have to interject is there are two amazing voices floating in this auditorium. One is Miss Chopra, who is, I think, a phenomenal singer. And she's got her graduation in music, which very few people know. And of course, my dear rock star, Amal, Kakamal, Kakamal.
And of course, Ishan is also an aspiring musician. More power to you, boy. So to answer your question, there is so much patriotism naturally in this film because of who we are making this film on. World number one is what she achieved. Nobody else has been able to do it. So the stuff that I used to say, the scenes that were written used to make me emotional. So actually any of the crying that you see in the film is not fake because it actually came from within. Exactly. And it didn't matter if I was doing 3 takes or 10 takes. It would just come every time I would say that line. Or if somebody said, "Tum is, you know, छोटी छोटी लड़कियां तुमको देख के बड़ी हो रही हैं," and I used to feel मैं साइना नेहवाल हूँ, and I used to start crying. So it is the power of the lines he wrote, and it is also the power of the girl that I'm playing. You know, I just hope people see it the way we've made it. दिख रहा है परी, I hope so. दिख रहा है. Okay, now let me call on stage Ishan Nakwe. Yeah. Hello. And hello Naisha, what's up baby? Come on stage. आ जाओ. ओहो, शाय की एक्टिंग है या शाय हो? ये है छोटी साइना और छोटी मैं, who is one of the best players in this country also, and that is Ishan. He is playing Saina's now husband Kashyap, and he was also the coach. तो जो कुछ भी मैंने बैडी के बारे में सीखा है वो literally ईशान के साथ रोज 3-3, 4-4 घंटे खेल के सीखा है. He's twice state champion, Maharashtra Yes. state champion, and Chhatrapati Shivaji awardee. Wow. Ishan. Yeah. Ishan, tell me about your journey with this film. I mean, first of all, अभी तक बहुत सारे ऐसे moments हैं which looks unreal to me. जैसे? जैसे कि watching Okay, I got it. everything coming हाँ. to life, and when I met Sir had already spent a lot of time on the film, and when I saw his passion and the way he was working on the film, मैंने कहा sir, I have to be part of this. I have to be part of this film because I've played badminton all my life. My family has been into sports, so I had to be part of this film. And the minute I got this opportunity, I asked sir, and he believed in me, and he had faith in me, and also Pari kept his faith in me, and we worked Wow. together, and rest is his. So परी का आप स्कोर क्या है 1 to 10 में बैडमिंटन में? इतनी प्रैक्टिस के बाद. Just for everybody to know, I mean, it's one of the fastest racket sports in the world. Also, the fastest smash which is recorded is around 490 kilometers per hour. So you can imagine to get, to even play badminton to a decent level, it is at least 2 to 3 years of hard work. Wow. Yeah, so Okay. it's, yeah. Nice. स्कोर अभी भी नहीं बताया. How sweet. Okay. वो लखनऊ से हैं. Well done. Got my answer. वो Perfect. बहुत क्या आप घुमाते रहिए सवाल.